magnification will be V by U, that is minus 10 upon minus 9. It will be 10. Now, therefore, area. This side will be 10 times, this side will be 10 times. तो 1 है, 1 है, it will be 10 into 10, 100 हो जाएगा. Area will be 1 into 10 into 1 into 10, 100 millimeter square. That is the first part. What is the angular magnification of the lens? The question, image is neither at D nor at infinity. बीच में है, 90 पर है देखो. So we have to use this general formula D by U. ये इसी में हमने बाद में U की वैल्यू पुट कर दी थी. लेंस फार्मूले से और हमें ये आया था. So this it means we can use this for any position. You can be any other position. Means image can be image can be either D or infinity or anywhere else. ये यूज कर सकते U की वैल्यू हमने 1 by U की वैल्यू पुट की, ये आया. फिर V was at D, therefore minus D पुट कर दिया था इसका. But V can be anything, तो ये वाला फार्मूला यूज किया, D by U. It can be used for image can be at D also or may not be at D also, may not be at infinity also. तो यहाँ पर D is 25 and U is 9, so it is coming 2.8 है ना. Angular magnification is coming 2.8. Is the magnification, that is linear one, is equal to magnifying power or angular magnification in B. A or B same है क्या answer? We can see no. A is coming 10. I mean in part A, linear magnification is coming 10, and part B, magnifying power or angular magnification is coming 2.8. Both are unequal. Equal कब होंगे? When the final image is at D, then both will be equal. The final image D पर बनती है ना, then they are found to be equal. Otherwise not. All right. Yes. और इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? Which side image will be there? Same side होगी, यहाँ कहीं पर. 90 means at larger distance. Like this, virtual image बनेगी 10 times. Because object is kept within the focal point. Focal point 10 है, U is 9 है. Focal point यहाँ कहीं पर है. Same side में image बनती फिर. All right. ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें. This is question involves so many points. Linear magnification, angular भी है, both are unequal है. और ये फार्मूला, it is angular magnification is not that two standard cases जो हम यूज कर रहे हैं, final image at D, final image at infinity. That is not the case here. Final image is neither at D, that is 25 centimeter, nor at infinity. It is in between. So D by U वाला formula use किया, from which we got the 1 plus D by F. All right. So moving on to the next one. Now to have the bigger magnifying power,
we need the two lenses. One is called objective, which is near to the object. Other is called eyepiece, which is near to the eye, observer's eye. Objective will be kept just beyond the focal point, and image will be made this side. First magnification is obtained here. Now for this lens, ये जो image है, intermediate image, it will act as a object for this lens, and its image will be larger one at D in the first case. Final image at D. And let's see magnification क्या होगा इसका. It is the ratio of image angle to the object angle at I when both are at D. इमेज तुम डी पे बनाए रहे, ऑब्जेक्ट का एंगल लेने के लिए उसको भी डी पे शिफ्ट करने के बाद एंगल लेना पड़ता है अल्फा. ठीक है. मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी V अपॉन U. पढ़ा हमने मैग्निफिकेशन. ऑब्जेक्टिव इतना प्रोड्यूस करते हैं और आई पीस फाइनल इमेज डी पर है. प्रीवियस केस में हमने डिराइव भी किया 1 प्लस डी बाई एफ. एफ ही लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज आई पीस का मैग्निफिकेशन है. When net magnification will be m naught into me. M naught is by objective, which is V by U. Me is 1 plus D by Fe. तो ये मैग्नीट्यूड इतना आएगा. इसका प्रूफ देख लेते हैं. ये हमने डायरेक्ट लिखा है. लेट्स प्रूव इट. देखो प्रूफ देखते हैं इसका. यहाँ पर देखो, is the object, this is intermediate image, and ये फाइनल इमेज है. तो बीटा अपन अल्फा मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपन अल्फा. बीटा इधर से है, अल्फा हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर. तब एंगल देखा 25 पर शिफ्ट करने के बाद. तो बीटा विल बी दिस ए डैश बी डैश अपॉन O2 बी डैश, एंड अल्फा यहाँ से देखो, दिस इज योर ए बी. इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर. दिस विल बी ए बी. यहाँ पे शिफ्ट किया, बी डैश पे शिफ्ट किया बिकॉज बी डैश इज 25, बी डबल डैश इज 25. तो वहां पे शिफ्ट कर दिया. तो ए बी अपॉन दिस डिस्टेंस, दिस वन, O2 बी डबल डैश. तो ए डैश बी डैश इज एच डैश इन्वर्टेड है माइनस. ए बी इज एच, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी. और ये क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा सा फिर से लिखते हैं. ए डैश बी डैश अपॉन ए बी. तो ये आपका है ए डैश बी डैश इज माइनस एच डैश, ये वाला, और ये एच है. और इधर ये जो है डबल बी डैश इज, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, दिस इज माइनस बी. यहाँ पे नहीं लिखा मैंने. दिस विल बी ठीक, माइनस में अगर सेम साइड में माइनस वी ई इनफैक्ट है ना. और ये वाला डिस्टेंस इज यू ई, वो भी माइनस है ना. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. और
एच डैश बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई यू लिख सकते हैं। माइनस एक माइनस बचा हुआ है वो यहाँ पे रखा, वी बाई यू लिख दिया, और दिस वी बाई यू is nothing but a मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ से देखो इसका इट इज एक्टिंग एज, यहाँ से जो फर्स्ट डेरिवेशन किया था वी बाई यू, बाद में 25 पुट यहाँ पर, ये इसका मैग्नीफाइंग पावर दैट विल बी कमिंग 1 प्लस डी बाई एफ ई, उसको फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। दिस विल बी नथिंग बट 1 प्लस डी बाई एफ। माइनस साइन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, उन्होंने मॉड लिया हुआ है तो माइनस हटा दिया बाद में। दैट्स हाउ दिस कम्स। ये जो ऊपर वाला डेरिवेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसमें यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल। यहाँ पे हमने डायरेक्ट एम नॉट एंड एम ई की वैल्यू पुट करके यहाँ पर नेट मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, यहाँ पे हमने प्रूव किया एंगल से। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज किया, प्रीवियस डेरिवेशन जो किया था ना थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया था, अभी यहाँ पे मैंने चेंज किया, माइनस साइन भी हमने छोड़ दिया था वहां पर, मैग्नीट्यूड यही से मैग्नीट्यूड लिखा था हमने, और यहाँ पे मैंने चेंज किया। यू में है द डाउट कि ये तो इन्वर्टेड है, इसको माइनस क्यों नहीं लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको माइनस लिया। यहाँ सभी में साइन कन्वेंशन लगाए, बाद में माइनस आएगा बट उसको एनसीईआरटी बुक दे राइट ओनली मैग्नीट्यूड, फिर मैं मॉड लिख के हमने फिर ये लिखा है। That's how, but you should always remember ray diagram and formula of this, because most of the time they will ask you draw the ray diagram and write the formula for magnifying power. So you have to do at least this much, you have to remember. Derivation also you can practice at the end. ठीक है? And final image, okay, and final image, उससे पहले ये पॉइंट भी देख सकते हो, देखो लेंथ ऑफ द ट्यूब इज बिटवीन टू लेंसेज, ये which is in two parts, ये आपके यहाँ पे इमेज बन रही है, that is V for objective lens, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेकंड लेंस के लिए, that is U for eyepiece. So length of the tube is V naught plus UE. Can you see this points? Length of the tube is V naught plus UE. UE is the distance of intermediate image for eyepiece. This will act as a object for eyepiece, इसलिए UE लिखा है, which is called intermediate image. ये ऑब्जेक्ट है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये फाइनल इमेज है। इंटरमीडिएट इमेज A dash B dash, this one is real, inverted and enlarged. Sometimes they ask about the intermediate image only, तो उसके बारे में हमने लिखा है final image is enlarged and inverted and virtual. Final image A dash, A double dash, B double dash is enlarged, inverted and virtual. Moving on to the next one. जब फाइनल इमेज अगर डीप पर है तो this is called
नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसके लिए इंटरमीडिएट इमेज इसके फोकल पॉइंट पे होनी चाहिए. नाउ यू कैन सी इट इज एफई. Rest of the diagram remains same. It is the ratio of image angle to the object angle when final image is at infinity and object is shifted back to D. Object को 25 सेंटीमीटर पे लेके एंगल लेना है ना. Intermediate image should be formed at focal plane of the eyepiece. Eyepiece के focal plane पर होना चाहिए. Now magnifying power, magnification by objective is V upon U, and for eyepiece D by F, because normal adjustment में D by F आता है. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. It will be V upon U and D by F, and length of the tube will be, ये देखो, V naught plus Fe. That will be equal to distance between two lenses called length of the tube. Getting or not? तो ये डायरेक्ट हमने लिखा. यहाँ पर तुम डेरिवेशन वैसे ही कर सकते जैसे अभी हमने किया. बीटा अपॉन अल्फा. बीटा जो है ये आपका दिस अपॉन दिस हो जाएगा. टेन थीटा के बीटा इज द स्मॉल एंगल विच कैन बी रिटन एट टेन बीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. एंड इसमें भी अल्फा कब लेना है? जब ऑब्जेक्ट को डी पर शिफ्ट कर दिया हमने. तो ए बी अपॉन ओ टू बी. डी पर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे डायग्राम बनाए. तो विच विल बी एच डैश अपॉन एच. एक माइनस एक बचेगा यहाँ पे माइनस में. तो विच इज नथिंग बट वी अपॉन यू. और ये जो है आपका, और ये यहाँ पर डी आ रहा है और यहाँ पे एफ आ रहा है. तो ये इन्वर्ट हो जाएगा डी अपॉन एफ. तो ये प्रूव करना था हमें. ठीक है. So these were the two adjustments in compound microscope, and when the final image is at infinity. All right. Yes, sir. Okay. Now, astronomical telescope, refracting type. It will have two lenses. Front lens, देखिए ये वाला, is bigger one because more light should be coming, so that image should be bright. We cannot control the incoming light because it is coming from distance. So it has to be bigger one and of larger focal length, and this can be smaller one of the small focal length. Focal length will decide the magnifying power. This will decide the incoming light should be more. ठीक है. And इसमें भी final image at infinity, that is called normal adjustment. It will be the ratio of image angle to the object angle, and both are at infinity. यहाँ से infinity से light आ रही है और image भी infinite पे बन रही जाके. दोनों infinity पर है. तो infinite से जब अब astronomical objects are found to be, or in fact will be at infinity, है ना. तो
image will be in the focal plane of first lens. यहाँ पे ये focal length होगा FO, and for this lens it will act as the object, and इसका भी focal length होना चाहिए so that final image is at infinity. दोनों के focal length पर focal point पर है. तो बीटा अपन अल्फा जब लिखेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ है, यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं. ये इन्वर्टेड है माइनस एच डैश अपॉन एफ ई. एज ए डिस्टेंस लिख रहे हैं इसको लेफ्ट साइड में, इस लेंथ से जो डिस्टेंस है माइनस हो जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग. नीचे है इसलिए माइनस, लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस है ना. और इसके लिए अल्फा के लिए डाउनवर्ड है माइनस, है ना, एच, और ये डिस्टेंस राइट साइड में इसलिए प्लस. तो ये कैंसिल हो गया, एक माइनस बचेगा, और यहाँ भी मैग्नीट्यूड ही लिखा जाता है एफ ओ अपॉन एफ ई. रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है. इसकी फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए, बिगर अपर्चर बिगर फोकल लेंथ, एंड दिस शुड हैव स्मॉलर फोकल लेंथ so that magnifying power should be large, and length of the tube is FO plus FE. ये FE है. Can you see this plus this should be length of tube which is equal to the distance between the two lenses. मैं इसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं आपको. मैग्नीफाइंग पावर दी होगी 10 टाइम्स, तो यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा दोनों फोकल लेंथ का, और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब भी दी होगी. तो दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं. FO एंड FE निकाल सकते हैं. FO विल बी बिगर वन, FE विल बी स्मॉलर वन. ठीक है. एंड इसमें व्हेन वी यूज दिस टेलीस्कोप फॉर द टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ के ऑब्जेक्ट, तो इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के लिए बीच में you can use another lens or you can use the prism. Prism यहाँ पर यूज करके बीच में, ठीक है, वो क्या करेगा, लाइट को इन्वर्ट, आईपीस यहाँ पे लगा देंगे, ये वाला लेंस इधर ले आएंगे, तो इन्वर्ट प्रिज्म विल चेंज द डायरेक्शन, इन्वर्ट द इमेज, एंड वी कैन सी द इरेक्ट इमेज. अगर इसको हमें एज ए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करना है. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इन्वर्टेड इमेज आती है, डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज आर राउंड इन शेप. उसके लिए इन्वर्टेड इमेज का कोई वो नहीं है, ठीक है. बट इसको टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट करना, अदर यू यूज एक वन मोर लेंस हियर फॉर इरेक्टिंग इट, और यू यूज द लेंस which will change the direction and also invert the image using the TIR. This guy, how to construct, I have that video, we can see it at the end. अगर टाइम बचता नहीं तो कल देखेंगे how to make this telescope, which is in fact terrestrial one, but almost same things are used here. And अगर फाइनल इमेज D पर है, ठीक है, तो intermediate image should be within the focal point of this. ये focal point, I mean यहाँ पे image बन रही है, तो इसका focal point यहाँ पे कहीं होना चाहिए. This will now, this is within the focal point, so final image is at D, that will be 25. So this will be FO. यहाँ तो infinite से आ रही, ratio of the object angle, image angle to the object angle. When image is at infinity, object is at D. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसी पे यही में डेरिवेशन क्या हुआ, देखो, कैन यू सी इट. बीटा अपॉन अल्फा, यहाँ से बीटा है ये ए डैश बी डैश अपॉन दिस डिस्टेंस, एंड अल्फा इधर से देखो ए डैश बी डैश अपॉन दिस डिस्टेंस, तो इट विल बी ए डैश बी डैश, तो कैंसिल ही होना शायद ना, ये कैंसिल हो रहा है. बी डैश ओ इज एफ नॉट और अनदर बी ई, ओके, इसको कैंसिल कर दो.
B dash E is this, A dash माइनस यूई हो जाएगा ये, तो माइनस को आगे शिफ्ट कर दो, 1/UE की वैल्यू पुट करेंगे, आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, तो V कितना है लेफ्ट साइड में माइनस डी पर है, U B U इज इक्वल टू माइनस UI, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, F एज इट इज 1/F, तो 1/UE की वैल्यू ये मिली, ये यहाँ पे पुट कर देंगे और F0 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं FE को बाहर निकाल देंगे, तो माइनस छोड़ देंगे, मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पर भी, FE को बाहर निकाला तो 1 प्लस FE/D, इसमें देखो F/D हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में D/F आता है याद है, उसमें D/F आया था, इसमें F/D आ रहा है, ये तो कॉमन है, देखो इसमें FO/FE यहाँ भी है, but apart from that 1 plus something is there, so magnifying power here is more, always it will be more when final image is at D, but eyes will be strained, there will be difficulty to see the image for longer duration, ठीक, तो D को हमेशा 25 पुट करना है, बिकॉज साइन कन्वेंशन में हमने माइनस ले लिया था, तो अभी हमें बार बार माइनस नहीं, न्यूमेरिकल में हमेशा 25 पुट करना है, गॉट इट, फाइनल इमेज एट D will give you this derivation. इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, जैसा हमने प्रीवियस पहले किया था वैसे ही है, बट अर्लियर वन थोड़ा सा चेंज किया है। देखो नाउ दिस क्वेश्चंस दोनों पार्ट इसी में देखे, दे आर गिवन यू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फर्स्ट केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, FO upon FE, put the FO is 140, FE is 5, 28 आ जाएगा, and when the final image is at D, formula is this one, इसमें पुट कर दो तो 28, ये 1.2 वाला मल्टीप्लाई कर लो, 33.6, this question is important, can be asked in the board examination, ठीक है। सेकंड केस में you can see more magnification, फर्स्ट केस में less magnification, but first case में eyes will not be strained, you can see it comfortably, called normal adjustment, ठीक है। Yes, sir. Okay, and later on these what is called astronomical telescope was also what is called, it can be reflecting type also, reflecting type में क्या है, we can take the further bigger lens, नहीं lens जो है are replaced by the parabolic mirrors which can be made of the larger size means further more bright image, and other advantages are also there, mirror use करने से, objective lens is replaced by the mirror, in this objective lens is replaced by the parabolic mirror, concave mirror, which has the advantages we will see at the end, last में देखेंगे, पहले डायग्राम देख लो इसका, rays are coming from infinite, ये आपका मिरर होगा, बीच में होल रहेगा उसमें, rays after reflecting comes to the secondary mirror which is convex, and it will send the rays to the eyepiece which will have the lens, ये लेंस रहेगा, एक मैग्निफिकेशन यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, concave mirror also magnifies and lens will also magnify, two magnification, this is called Cassegrain, कैसेग्रेनियन और कैसेग्रेन टाइप साइंटिस्ट का नाम है। फिर न्यूटन ने क्या किया, ये यहाँ आईपीएस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सो दैट यहाँ पर we don't have to cut the mirror in between, so slight changes he did, and
made the Newtonian type telescope. This is given in textbook. टेक्स्ट में दिया है, बट न्यूटोनियन वाला नहीं दिया है. This diagram is not given. It should be at the side of the tube. यहाँ पे शिफ्ट किया तो rays coming, यहाँ पे प्लेन मिरर लिया उसने. प्लेन मिरर will just divert the rays inside the eyepiece, which is on the side of the tube. Otherwise things remain same. So both they will have the advantage. क्या advantage होगा देखो, ठीक है. Bigger mechanical support is required, less mechanical support, because lenses are heavy and these are light, mirrors are light. No chromatic aberration. Lens में क्या होता है, because of the different lens में क्या करना पड़ता है, achromatic lens लेने पड़ते हैं. इसमें क्या होता है, chromatic aberration होता है, रेड कलर आगे फोकस होती है, वायलेट. तो यहाँ पे एक डबलेट लेंस बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ रहता है. तो वो न्यूट्रलाइज करता है ये क्रोमेटिक एब्रेशन को, तो वो लेंस लेना पड़ता है. एंड मिरर में ऐसा नहीं होता है. नो स्फेरिकल एब्रेशन हियर. पैराबोलिक मिरर लेंगे ऐसा, तो ऑल द रेज विल बी फोकसिंग ऑन द फोकल पॉइंट, दूर वाले भी पास वाले भी. बट मिरर लेंसेज में रेज जो है, लेंसेज यहाँ पे डायग्राम है, देखो ऑल द स्फेरिकल एब्रेशन किसको बोलते हैं, देखो ऐसे होता है. ये पैराक्सियल रेज आर मीटिंग हियर, मार्जिनल, आई मीन पैराक्सियल रेज आर मीटिंग हियर, मार्जिनल रेज आर मीटिंग हियर. तो इसको अवॉइड करने के लिए पैराबोलिक ले लो. ऑल द रेज विल बी मीटिंग टू द फोकल पॉइंट ओनली. और लेंस में ये वाली मार्जिनल रेज आर मीटिंग एट लेसर डिस्टेंस, पैराक्सियल रेज आर मीटिंग. तो ये भी प्रॉब्लम आती है. तो जो कि मिरर पैराबोलिक मिरर में नहीं आएंगी. ये कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, इसमें आएंगी. पैराबोलिक मिरर विल फोकस ऑल द रेज एट वन प्लेस, which is called no spherical ablation. Only one side finishing करनी है आपको मिरर में. And bright images, since larger mirrors can be used, बड़े मिरर्स में ज्यादा लाइट can be collected and hence bright image will be used. Disadvantage क्या है, difficulty in reflecting. इसमें फोकसिंग की डिफिकल्टी ऑफ सेटिंग. तो क्या देखा हमने, लाइट वेट है, लेस मैकेनिकल सपोर्ट नीडेड, नो क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन, ओनली वन साइड फिनिशिंग रिक्वायर्ड, ब्राइट इमेज कैन बी, लार्जर मिरर्स कैन बी यूज्ड. अगर हमने लार्जर लेंसेज लगाए तो लेंस थिन होते हैं, दे स्टार्ट ब्रेकिंग एट द एजेस. एजेस पे थिन होते हैं ना, तो वेट की वजह से ब्रेक हो जाते हैं वहां पर. तो एक लिमिट है, उससे ज्यादा बनाने में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है. बट मिरर्स कैन बी मेड लार्जर. तो इसका इफ टाइम इज देयर वी कैन सी दैट telescope but terrestrial type. So let's see how can you make for yourself at home. ठीक है, ये हो गया. Tomorrow we will be seeing, I mean next week, revise the things, what is called wave optics. उसमें wave front and interference phenomena, that also we can see if time is there. दोनों वीडियो देख लेते हैं, wave fronts क्या है और interference में कैसे, interference phenomena क्या है. We'll see the video of both the demo, both the experiments. Let's see quickly. This one is the for telescope.
These are the different eyepieces. This is for changing the direction.